वीडियो कवरेज लाइट बढ़ा दे। लाइट कहाँ से बढ़ेगी? ये जरा इसमें से मेरा पे स्लिप निकाल दो अप्रैल पे में। क्या निकालना है? पे स्लिप जरा ठीक करो, तरह इनको हटाओ यहाँ से। ये तुम ठीक करो इसको, ठीक लगाओ या तुम मट्ठा पिला दे। ये पानी बोतल पानी उसके को पानी मिल जाए। ठीक है जी। ये क्या सदा भाई एग्जॉट क्या है? BBAU HR करके था ना? हाँ BBAU HR करके कुछ है। क्या है क्योंकि Good morning, sir. Good morning, madam. Rashi, madam, good morning. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हमको दो सर आप ना दो जगह से लॉगिन है, शायद इको हो रहा है। मेरा ना अरे मेरे साथ दिक्कत हो गई है, सिस्टम का जो माइक्रोफोन है वो काम नहीं कर रहा है, तो हमको अरे मेरा ही शायद इको कर रहा है ना। गुड आफ्टरनून मैम एंड सर। दूसरे वाले को म्यूट कर दीजिए और ये वाला ऑन कर लीजिए जिससे आप बोल रहे हैं, और उसके वॉल्यूम दूसरे वाले के बिल्कुल कम कर दीजिएगा। अब आ रही है आवाज? अभी भी इको हो रहा है। सर एक फोन का वॉल्यूम एकदम कम कर दिया। अच्छा फोन का वॉल्यूम करें, ओके अब ठीक है, गुड ग्रेट। नमस्कार। नमस्कार 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 मैडम। एक अब मैं हाथ में लेके बैठा हूँ यू सी। आज जो है यूनिवर्सिटी में हमारे डिपार्टमेंट में जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसमें वाईफाई का सर्विस बहुत खराब चल रहा है, बार बार ड्रॉप हो रहा है यहाँ पर सिग्नल। सुनी मुझे लगता है वाइस वीसी साहब महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी
प्रोफेसर आनंद प्रकाश जी शायद जुड़ चुके हैं और विजय कुमार सर भी शायद जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर हमारे शुरू कर सकते हैं और हमारे चेयरमैन और इस जो प्रोग्राम उसके चेयर प्रोफेसर आरपी सिंह सर भी जुड़ गए हैं और हमारे स्पेशल लेक्चर जो आज देंगे प्रोफेसर कमान सिंह वो भी शायद जुड़े हुए हैं। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? ठीक हैं? नमस्कार और बहुत बहुत बधाई आपको आनंद जी। सर धन्यवाद। राशि मैडम, विजय कुमार सर है क्या? टीवी विजय कुमार सर? हाँ, उन्होंने भी ज्वाइन कर दिया है। हाँ, अभी ज्वाइन किया था उन्होंने सर। सर विजय कुमार सर। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। यदि नमस्कार नमस्कार सर सर प्रोफेसर आरपी सिंह सर। हाँ, वो भी है सर, वो भी आ गए। प्रोफेसर आरपी सिंह सर। मैं हूँ, यही हूँ सर। नमस्कार 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 सर। प्रोफेसर कमान सिंह सर। प्रोफेसर कमान सिंह सर। हेलो सर, नमस्कार। ये वहीं रखो, ये गाड़ी में रखो, केवल चेक बुक बाहर निकाल दो और गाड़ी में रखो। गाड़ी ये जो ना इसमें पीछे वो जो छपा है ना, ये ऐसे जितना ये विज्ञापन उतने इसमें पता नहीं, एक दिखाता है मैसेज और वैसे नहीं दिखाता है कोई अनसीन। पेंडेंट कहाँ से लगा है? क्या देखिए, नहीं घर पर नहीं है। कोविशील्ड की स्लिंक है सच। दूसरा क्या था? कोवैक्सीन, नोवा एच यार इसमें क्या कोई हिल अलाउ करना है? मेल में भी होगा मेरे ख्याल से, जो यहाँ हुआ था ना।
Yes, Dr. Raj Shree. Namaskar. Yeah, everything ready? I am in the class. What happened? Now we can start, madam. I am in the class and I am celebrating this day along with my students and scholars. विजय जी जुड़े कि नहीं? विजय जी नमस्कार 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 नमस्कार. कहाँ हैं विजय जी? वीडियो में आइए, वीडियो में थोड़ा सा. नमस्कार नमस्कार. मैं आ रहा हूँ वीडियो आप में. कहाँ हैं? मैं आ रहा हूँ वीडियो कहाँ में. पर हैं? आ रहा हूँ. मैं क्लास में बैठा हूँ along with my students and scholars. तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. My is Professor Vijay Kumar is Senior Professor and Chairman of Department of Computer Science in JNU. Thank you, Professor Vijay, for joining. हाँ, and आप कैसे हैं? How are you? I am very much fine. Very good, very good. अलका मैडम, अलका मैडम मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल सर. मैं शुरू बट अलका मैडम अभी भी मुझे लग रहा है दिक्कत से चल रही है. अलका मैडम ठीक है? अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या मेरी सर? आ रही है. आप प्लीज शुरू करिए. ओके. नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है. आप शुरू करिए. Very good afternoon to everyone. I, Dr. Alka, welcome you all in the celebration of National Technology Day. Technology is everywhere, from seizure of a doctor, which has power to save a life, to the atom bomb, which has power to destroy several lives. So now, this is the responsibility of we technologists, researchers, teachers, and doctors to utilize, to harness its power so that it can be utilized for the betterment of the society and for the better future of the human being. So this is why the theme of this event is integrated approach in science and technology for sustainable future. So first of all, I convey my heartfelt gratitude to our Honorable Vice-Chancellor, Professor Sanjay Singh sir, for his unconditional support and guidance. Further, I welcome Professor R.T. Singh sir, Dean IQAC and Chairman IIC and Chairman of the program. I extend my sincere welcome to our chief guest, Professor Anand Prakash sir, Honorable Vice-Chancellor, MGCUB Motihari, and my heartfelt welcome to our guest of honor, Professor T.V. Vijay Kumar sir, Professor and Dean, SC&SS JNU New Delhi. I welcome Professor Pawan K sir, Senior Professor, Department of Chemistry, who will be delivering a lecture. And further, I welcome Professor Sanjay Dwivedi sir, Dean SIST, and Patron of the event. I welcome Professor R.A. Khan sir, Senior Professor, Department of Information Technology, and Patron of the event. I welcome Dr. Dhirendra Pandey sir, Head of Department of Information Technology, and coordinator of the event. I also welcome Dr. Raj Shree madam, who is Associate Professor in the Department of Information Technology and co-coordinator of this event. I welcome the members of organizing team, Dr. Pawan K Chaurasia and Dr. Amit K Singh in the event. And last but not the least,
I welcome all the faculty members and my students present here to celebrate this event. So without any delay, I invite Dr. Amit Kumar Singh sir for reporting of the event. हेलो जी आवाज आ रही है सर? नमस्कार। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार है। सबसे पहले कार्यक्रम की थीम इंट्रोडक्शन के बारे में कार्यक्रम की को-कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राज श्री मैम बताएंगी। तत्पश्चात इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे सर अपना उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद इस कार्यक्रम के संरक्षक प्रोफेसर आरिफ खान सर अपना वक्तव्य रखेंगे। स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डीन प्रोफेसर संजय कुमार द्विवेदी सर नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर अपनी बात रखेंगे। इसके बाद प्रोफेसर कमान सिंह सर अपना उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात इस कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर टीबी विजय कुमार सर अपना वक्तव्य देंगे। इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट प्रोफेसर आनंद प्रकाश सर इसके बाद अपना उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। प्रोफेसर आरपी सिंह सर जो इंस्टीट्यूशन इनोवेशन सेल के चेयरमैन हैं और इस कार्यक्रम के चेयरमैन हैं अपना वक्तव्य रखेंगे। अंत में डॉक्टर पवन कुमार चौरसिया सर वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर। May is the important month for us, and there are several reasons behind celebration of National Technology Day in this month, including successful conduct of famous Pokhran nuclear test by our missile Noble missile man, Dr. APJ Abdul Kalam, and the testing of Tripul missile, etc. And this is the reason late Sri Atal Bihari Vajpayee ji declared 11th May as the National Technology Day. So for further introduction of the theme of this National Technology Day, I would like to invite our energetic co-coordinator Dr. Raj Shree Madam. Am I audible? Yes, madam. Okay, thank you so much, madam. माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह सर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के दिशा निर्देशन में हो रहे इस प्रोग्राम में हमारे साथ में मुख्य अतिथि के रूप में जुड़े हुए हैं प्रोफेसर आनंद प्रकाश सर, जो कि बायो साइंसेज में एक बहुत ही बड़ा नाम है और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसके लिए बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय है हमारे लिए। साथ ही साथ कंप्यूटर के जाने माने व्याख्याता प्रोफेसर टीवी विजय कुमार सर भी हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में IQAC के डायरेक्टर और कहार पत्रिका के प्रधान संपादक प्रोफेसर आरपी सिंह सर भी जुड़े हैं, जो कि किसानों के मुद्दों को किस तरीके साइंस और टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए इसके साथ गतिविधियां करते रहते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर संजय कुमार सर, संकायाध्यक्ष स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम के पैट्रॉन प्रोफेसर आरिफ खान सर। हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे सर, विभागाध्यक्ष सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जो कि इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर भी हैं। साथ ही साथ डॉक्टर पवन कुमार चौरसिया सर, डॉक्टर अलका मैडम, डॉक्टर अमित कुमार सिंह सर और वरिष्ठ शिक्षक जैसे कि हमारे साथ कमान सिंह सर जुड़े हुए हैं, BC यादव सर जुड़े हुए हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से हमारे साथ एक वरिष्ठ शिक्षक प्रोफेसर पुनीत मिश्रा सर भी जुड़े हुए हैं। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आज की जो थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस पर मुझे बात रखने के लिए जो समय दिया गया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर हम आज की सिनेरियो की बात करते हैं तो विकास को किसी भी देश की टेक्नोलॉजी की समृद्धता से जोड़ा गया है।
जैसे कि आप देख लीजिए, जो टेक्नोलॉजी में जितना ज़्यादा एडवांसमेंट दे रहा है या कोई इनोवेटिव चीज़ दे रहा है, वो देश उतना ही ज़्यादा समृद्ध समझा जा रहा है। इसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रथ पे सवार होकर के आज हम लोग चंद्रमा और मार्स पर पहुंच चुके हैं। लेकिन जब हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो क्या हम इस रथ पे जो सवार हैं वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं, ये एक सोचने का प्रश्न है। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो 3 चीज़ों को बिना जोड़े हम अपनी बात रख ही नहीं सकते, और वो चीज़ है सोसाइटी, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी। ऐसे बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जैसे कि कोरोना ने हम लोगों को ये बताया कि हमारे लिए ऑक्सीजन कितनी इम्पोर्टेंट है। वही ऑक्सीजन के लिए जब हमें पता ही है कि पीपल का पेड़ या वट वृक्ष बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन हम लोगों को देते हैं, और जब हमारे पूर्वज या बड़े लोग हम लोगों से ये कहते थे कि हमें पीपल को अगर हम उसके साथ उखाड़ेंगे या उसके साथ कुछ भी गलत व्यवहार करते हैं तो हमें उसका दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हमें उस टाइम साइंस और टेक्नोलॉजी उसके पीछे के लॉजिक के बारे में नहीं समझती, तो हमें लगता था कि वो अंधविश्वास है। जबकि जो जो प्राकृतिक संसाधन हमें वरदान के रूप में मिले, वही हमारे धर्म और हमारे जो बड़े लोग थे उन्होंने उसके साथ जोड़ करके उसकी आस्था रखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना सिखाया। इसी तरीके से अगर हम एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो जिसमें हम ई गजेट की बात करते हैं, तो आप ये देखिए कि एक घर की अगर हम बात करते हैं तो उस घर में आपके पास लैपटॉप भी होगा, उस घर में आपके पास डेस्कटॉप भी होगा। आप जितने बच्चे हैं उनके लिए आप टैबलेट भी ला करके रख देते हैं। जितने फैमिली में मेंबर्स हैं अगर हम उनकी बात करते हैं तो उन सब के पास मोबाइल होगा। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट ने उन्हीं सारे गजेट्स को 5 से 6 साल के बाद वेस्ट में तब्दील कर दिया। तो धीमे धीमे हमारा जो ई वेस्ट है वो बढ़ता चला जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आज जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं एक ई वेस्ट के एक ढेर के ऊपर बैठ करके आपको उसके बारे में बताऊं। इसी तरीके से अगर हम पूरी तरीके से प्राकृतिक संसाधनों की तरफ की बात करें, तो जैसे कि कुछ कंट्रीज है, जैसे सऊदी अरेबिया की बात करना चाहती हूँ, जहाँ पे सिर्फ वो ऑयल पे अपनी समृद्धता को दिखाते हैं। इसी तरीके से कुछ कंट्रीज हैं जो सिर्फ माइनिंग की बात करते हैं। तो अगर वो पूरी तरीके से उसी पर रहेंगे और प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन है वो गलत तरीके से करेंगे, तो एक दिन उनके लिए भी ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेकर के जाएगी। तो उसके लिए हम लोगों को हर चीज़ के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। तो पहली जो चीज़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सोसाइटी, तो हमें जो रहने वाले हमारे देश के सिटीजन्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं या जिन इंस्टीट्यूशन के साथ में हमारे जो पीपल जुड़े हुए हैं, उनको एक कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ ले जाने की बात हमें करनी चाहिए। इसी के साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया कि हमें लॉजिक हमारे लोगों को नहीं पता है, उसके लिए हमें उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। पब्लिक को जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से जो हमारा साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग है उसको हमें बिल्डअप करने की ज़रूरत है। तभी हम जो हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो सार्थक हो पाएगा। तो हमारे जो आज कार्यक्रम में जुड़े हुए विद्वान गण हैं, वो आप लोगों को इसके बारे में और अच्छे से बताएंगे। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रणाम। धन्यवाद आपकी मैडम। आप सभी को बता दूं कि ये प्रोग्राम जो हम ऑनलाइन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम लोगों ने, हमारे जो एचओडी हैं डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे सर, उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑफलाइन ऑर्गेनाइज करना चाहा था, परंतु कुछ दुर्घटनावश उनके आकस्मिक उनके पिताजी की मृत्यु हो गई और फिर इस प्रोग्राम को हमें ऑनलाइन करना पड़ा। फिर भी मैं सबकी हिम्मत और जुझारूपन की दाद देती हूँ कि मुश्किल से 15 दिन पहले ही उनके साथ ये इतना दुखद संयोग हुआ, परंतु फिर भी वो उसी जुझारूपन और एनर्जी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं उनको इनवाइट करूंगी कि वो अपने कुछ शब्द हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे सर।
सकता है कनेक्शन कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। मुझे माफ कीजिए, आज मैं यहाँ के वाईफाई के कनेक्शन की वजह से मैं कई जगह बदल बदल के मुझे बैठना पड़ रहा है। जहाँ भी कनेक्शन लॉस्ट होता है मैं उस जगह पहुँचता हूँ जहाँ कनेक्शन आ जाता है, तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर अलका मैडम मुझे बुला के लाई क्योंकि मेरा वहाँ कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। थैंक यू अलका मैडम, मुझे आपने निमंत्रित किया है 2 शब्द बोलने के लिए। ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, डीन एकेडमिक अफेयर्स एंड चेयरमैन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल प्रोफेसर RP सिंह सर, प्रोफेसर आनंद प्रकाश सर is the honorable vice chancellor of the Mahatma Gandhi Central University of Bihar, Professor TV Vijay Kumar sir, Dean of the School of Computer Science at Jawaharlal Nehru University, Delhi. Our Honorable Dean Professor SK Dwivedi sir, our mentor, our guide, Professor R. Khan sir. Dr. Raj Shree is the actually he is a coordinator of this event because during my absence he has managed all these things. So I must thanks to Dr. Raj Shree, Dr. P. K. Chaurasia sir, Dr. Alka madam, Dr. Amit Kumar Singh sir, and other respected dignitaries and dean, heads of all the department, academic fraternity, and dear students. Today is a momentous day for us as we are celebrating yet another anniversary of the National Technology Day, and that too in this year when the nation is dedicating each Indian mission to the Azadi Ka Amrit Mahotsav. If the journey of the saluting of Indian innovation started on 11th May 1999, today on 11th May 2022, the Indian technologists have stamped their expertise on the global map. From space, agriculture, pharmaceuticals, to the digital know-how, the Indian technologists have emerged as the most consistent and inventive think tanks across the world today. We, the teaching and learning community today, are fortunate that we are enjoying the legacy that was created by some of the most dedicated scientists, researchers, and technocrats in the world. These legends were born in India, but even more importantly, they lived and worked in India to enrich the nation. So we have glorious past, and the present is already the best center stage for any technocrat who wants to invent and launch. The IMF has ranked us as one of the fastest growing economies of the world. We are world's pharmacy, and we are placed third by the Global Unicorn Index for our startups. Besides this, all Indian efforts are being motivated by the Vocal for Local initiative taken by our central government today. But these achievements, the role and responsibilities have become even more challenging. I represent a digital world,
So my appeal to all the scholars and technologists in the Department of Information Technology and BBAU as well, to create digital solutions that can add to the ease of living of the end users. The world is fighting a data war, and I strongly believe that preventing data poaching and cyber abuses of the end user is the biggest challenges for the digital technologies today. Hence, I take this forum to appeal to all the technocrats mind in computer science and information technology and other engineering stream to join the incubation hub at BBAU and work in the direction as a unit of inventors. Yet again, I reinforce my pride and faith in the research effort and projects that are underway in the country. I also congratulate each technologist in the nation who is adding to the intellectual capital of the country. Thank you. Thank you very much. Over to Dr. Alka. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Dhirendra Pandey, sir. Now I invite our mentor and the Senior Professor of the Department of Information Technology, Professor R.A. Khan, sir, for his address. Thank you, madam. Thank you very much. Am I audible? Yes, sir. Great. Okay. All right. So I must start with extending my heartiest thanks to our Honorable Vice-Chancellor, sir, for his continuous support and motivation for organizing these kinds of events regularly. Distinguished dignitaries, respected academic fraternity, dear scholars and students, it's indeed an honor to me to be a part of yet another seminal chapter of National Technology Day of our nation. I take this August forum to applaud the ingeniousness of Indian technologists in India, as well as those basically who are representing our country across the globe today. As we commemorate the achievements of technologists, I would also like to focus more specifically on the thematic ideology that guides this meet. With more than 22 years of a career as a technologist and academician in the field of information technology myself, I strongly believe that the commitment for us now is to create a technological solution that must be sustainable and also economically viable. Our globe is battling with climate change and the resources are shrinking. From energy to digital time, there is a paucity and deficit of all assets. Against this grim backdrop, we, the inventors, must realize the abstract, time-consuming, and onerous research projects ought to give way to effective, workable, and easily affordable green technologies that are all-inclusive. So in this league, digital technology has been a phenomenal success. And the response to Indian minds in the field of information technology is basically decidedly epochal. However, there are multifold challenges that still need to be addressed in this domain. The most imminent concern is, and of course has always been, safeguarding the privacy and integrity of users of the digital age. This has been cited by the head of the department, Dr. Dhirendra Pandey, just now.
It is indeed decimal that while the corona warriors across the world were saving precious lives with the digital data repository, many across the dark web are using the same data and misusing the same data, in fact. While many continue to perceive the technological assets as a double-edged sword, I'd invite all the scholars working in this domain of digital technology to change this perception. All IT assets must not only facilitate easy access and use, but also ensure utmost privacy. Yet another query that I would like to cite here for research investigators in the field of IT is much debatable, and that's nothing but the cryptocurrency. The academicians and the industry must work in tandem, and that too at an expeditious speed, to outline digital mechanism to save the financial reserves of those who are investing in cryptocurrencies. I foresee the advent of many technological breakthroughs that are going to be engineered by Indian innovators in near future. In fact, we are living in the era of Make in India, and my appeal to the creator of all the creators is basically they innovate. Let it be safe and sustainable for the end users. So yet again, I take this moment to join the nation in saluting each technological endeavor brought forth by our inventors. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir, for your address. It is true, sir, that in the digital world, it has become very tough for us to maintain our privacy. And this is the, I think, need of the hour to address this issue. Further, I request Professor Sanjay Dwivedi, sir, Dean SIST and Patron of the event, to please address the event. Thank you, Dr. Alka. मैं आपको ढूंढ रही थी, सर किसी और का नाम आ रहा था, मुझे लगा। हाँ, क्या बोला आपने? मैं आपका एक्चुअली नाम नहीं आ रहा था ना, आप किसी और नाम से ज्वाइन है, तो मैं सोचती थी कि आप डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए। अच्छा, ठीक है, चलिए। So let me first congratulate all scientists, engineers, and technocrats of our country on this very auspicious occasion, auspicious day, as we are celebrating the National Technology Day. Earlier, we already have celebrated that Science Day. So possibly there must be a difference, because science is the backdrop or on the backhand of every technology. So we have already celebrated Science Day, and we used to celebrate this many years. So my congratulations and greetings to all. Now I can see so many faces. Honorable Vice-Chancellor of our university. I think Alka sir is not there, na? Actually, sir, Professor R.P. Singh sir is chairing this event. Okay. So Honorable Vice-Chancellor sir, Professor R.P. Singh ji, Dean Academic Affairs of our university, and our chief guest of this function, Dr. Anand Prakash ji, Professor Vijay Kumar ji, my colleague. Thank you for joining, sir. And Anand ji is there.
Anand ji has joined. Yes, Vice sir. Chancellor. Yes, sir, he is there, sir. Okay. So Anand ji, good morning or rather good afternoon. So what should I do? Though we celebrate so many days every year, every day is some day for all of us, and now it has we only have 365 days in a year, so we can't celebrate, we can't generate a new day, so we just impose a new day on the same day. So sometimes it happens that since morning till evening we do celebrate so many days, but we don't do anything. We keep on celebrating, but we don't do anything. But still, since government has planned it in I think 1998, at the time when Pokhran happened, or at the time when Pokhran 2 happened, when there was a government of Atal Bihari Vajpayee ji, our great scientist who is no more in this world, happens to be President of India also, and Dr. Raja Ramanna, another great scientist. Due to them, this happened, that our Pokhran 2 happened in 1998, and since then, I think we are, if I'm not wrong, we are celebrating this Technology Day. So I must congratulate everyone, because we all are technocrats, we all believe on technology, and even if we are not from this background, we do use technology on our day-to-day life. No one is a spare of technology. Even the housewives use technology, children use technology, Rickshaw pullers use technology. We use technology. So I am sitting along with my students and my scholars in the department, and we are using technology right now. So it's a great thing that we have done till now in our country. And I can remember that COVID platform that our government has designed and developed for vaccination. It's a great technology that many countries in the world have requested, and they have used this platform, this technology, because it's a mass data generating technology and huge data repository, but everything went on successfully. Series of vaccination drives using that platform. That is a very good technology of our computer science people. So we must congratulate our the developers of the technology, and we must keep it on. Second important thing I would like to share on this particular day, that we produce lots of engineers, doctors, other technocrats in our country, but most of them remain unemployed. So we need to focus on this also. Why do we produce so many engineers without having the demand of them? One more thing I would like to say, that we have started filing so many patents in our country. China has filed, thousands and lakhs of patents. America already has is the master, and European countries are another master. China has filed so many patents, but they at least have delivered certain thing to the world. Technology has been there in China, and we all know, we all use the technology from China. So patent has been transformed to the technology and the business establishment, but our patents have not been transformed. Our patent mostly remain academic. So we need to focus on this. Why do we do a research, we do something, but it remains an academic work? It never gets transformed to the industry. So no business can get actually benefited from our research work. So our research should be transformed. We do a lot more research. Thousands of, maybe lakhs of PhDs in technology field are being awarded in our country, right from IIMs to IITs to NITs to central universities to many more. But as far as technology transformation is concerned, we are far behind in the world. So this needs to be addressed on this particular day. Rather than celebrating, my personal opinion is to think about what still we lack, despite being so advanced that every other country cannot dictate us
the country, all the leading countries in the world, technologically advanced countries must listen to us. We are on this position now, but still it is not enough. We must be advanced in the technology, like Make in India program that government has initiated. I personally appreciate it, but nothing more is happening in this. So it needs to be done. So with these words, I think we all have to be congratulated, and we all have to be very seriously thinking that why technology transformation is not happening in our country, despite we are being very powerful in the world. So we need to focus on it. I once again congratulate the organizers, Dr. Dhirendra Pandey and his entire team, and my colleagues, Professor Vijay, the Vice-Chancellor, Professor Anand Kumarji, who happens to be our colleague earlier in this university. So thank you all. Thanks again. Thank you so much, sir. You rightly said that life is unimaginable without technology. And you highlighted the need to transform our research so that it can bridge the gap between industry and academia. I am very thankful to you, sir. Further, I invite Professor Pawan Singh, sir. He is senior professor in the Department of Chemistry, and he is also called the sugar man of India. He is well known for his research on the sugar. So I invite Professor Pawan Singh, sir, for his lecture. हेलो अलका, आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है सर. Thank you so much for inviting me. First of all, I do like to take this opportunity to thank Dr. Dhirendra Pandey, Professor R.A. Khan Saab for organizing, perhaps in the first time in this university, if I am not wrong, the Technology Day. Actually, the theme of this National Technology Day is the integrated approach in science and technology for sustainable development. Why? Why? Because 2022 has been declared by United Nations Organization as International Year for Basic Science for Sustainable Development. Therefore, keeping in view the theme of the National Technology Day, that too on the 11th May 2022, is Integrated Approach in Science and Technology. Actually, on this very day, 11th May, as it marks the anniversary of the Pokhran nuclear test in 1998. Am I audible? Alka? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Actually, to mark the anniversary of the Pokhran nuclear test in 1998, when Prime Minister was Atal Bihari Vajpayee Saab, and at that time, the great scientist Dr. APJ Abdul Kalam Saab, in his presence, this Pokhran nuclear test of 1998 was held. और उस समय का एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया मैं आपको बताता हूं. जब ये टेस्ट होने वाला था, उससे पहले बड़े पशु पेश में थे कलाम साहब. तो कलाम साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी साहब से कहा कि साहब ये बताइए, कहीं ये कल टेस्ट होने से पहले लीक तो नहीं हो जाएगा? ये जो खबर है ये लीक तो नहीं हो जाएगी? तो अटल जी ने कहा साहब कैसे लीक हो सकती है, क्योंकि आप भी अनमैरिड हैं और मैं भी अनमैरिड हूं. That was the chemistry between the both great visionary of our country. और इस पर्टिकुलर नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर I would like to cite the examples of recently
the ongoing controversy regarding the recommendation, official reference recommendation of regarding this Covishield and Covaxin by the WHO. आप देख रहे होंगे कितना प्रयास करने के बावजूद पार्शियल उन्होंने रिकमेंडेशन दिया, बट इन स्पाइट ऑफ दैट अभी अभी आप खबर सुन रहे होंगे, पेपरों में आ रहा है, 2-3 दिन पहले के पेपरों में आया है कि WHO has denied the official recommendation as far as this Covishield and Covaxin made from India. Therefore, my sincere request to all the participants and all the guest speakers is that what is the conspiracy of the developed nation, particularly for any research innovative ideas developed by the developing countries? Unless and until we have the expertise on to how to make any analytical method approved by a competent authority like WHO, because it is an example of the drugs. It is an example of the medicine. Therefore, ultimate authority and mandate to fix the standard for that particular area or incident or material goes to WHO. If it is a food product, the responsibility or mandate for that is FAO, Food Agriculture Organization. And these two organizations, Food Agriculture Organization and WHO, World Health Organization, comes under the banner of Codex Alimentarius Commission, CAC. And at present, this Codex Alimentarius Commission, particularly this WHO, is doing the work under the aegis of the China. And if the vaccine made by our country, that too by our Indian scientists, method is indigenous, they will not accord its recognition unless and until it is proved on scientific footing. Therefore, what is that scientific footing is that we must follow certain protocols. What is that protocol? The protocol for official recognition is AOAC, Association of Analytical Chemists 2002 regulations, ISO protocols, IUPAC protocols. If there is a domestic collaborative trial as well as international collaborative trial based on all these protocols, and if these protocols endorse the method certification, then only any recommendation, any formulation, any regulation becomes a reference method or reference. Therefore, we should keep a close eye on these issues as far as these Covaxin and Covishield is concerned. Because if we are able to produce these Nova vaccines in our country for our people, and we are also going to provide these Covishield and Covaxin for foreign countries as well, जो उनका हमारे देश से रेवेन्यू जाता था वो रेवेन्यू खत्म हो जाएगा, उनके सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाएंगी. Therefore, they are trying their level best, and it is being seen as a conspiracy by the developed countries, particularly by the China under the aegis of WHO, under the aegis of China, and we should keep a close eye on this issue. And in this particular technology day, I must play on record because this is the day for the recognition and celebration of any new discovery, innovative idea
developed or evaluated by our scientists, engineers, doctors, etc., etc. Therefore, the another aspect of, because the theme of this National Technology Day 2022 is an integrated approach in science and technology for the sustainable development. Whatever you are doing in your laboratory, it must go to the field. Whatever you are performing experiments in your laboratory, whatever you are producing in the form of paper of patent, it is useless unless and until it is translated into the products beneficial for the society. And under the able guidance and visionary guidance of our Prime Minister, who was awarded 2018 Champion of the Earth Award, it is exactly in line with the sustainable development. And sustainable development, and as far as innovative idea, skill development. In India, our country has progressively increased its status from now. As far as innovative idea for the sustainable development is concerned, हम आज 42वें पायदान पे हैं, जो कि 2018 से हम 48 से लेके अभी 42वें पायदान पे पहुंच गए. And I am sure that under the visionary leadership of our dynamic Prime Minister Narendra Modi, who says that Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, Jai Anusandhan, certainly in the coming future, in coming days, our nation will get its actual status as far as these Covishield, Covaxin, and other areas of science and technology are concerned. At the last, I must play on record the untiring work done by Dr. Dhirendra Pandey. However, recently he lost his father. In spite of that, he organized this event. For that, credit goes to him and the entire team under the able leadership of Professor R.A. Khan. Thank you so much. Thank you so much, sir. You rightly said, sir, that we should not only develop the technology, but we should also protect our technology from the conspiracy of the other countries. So thank you so much, sir, for your lecture. Now I would like to invite our guest of honor, Professor T.V. Vijay Kumar, sir. He is the Dean of the School of Computer Systems and Sciences, JNU, New Delhi. तो कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो कि परिचय की मोहताज नहीं होती, but it is a custom to introduce the guest. So I feel proud to follow the custom and share his brief biodata with you all. So, Professor T.V. Vijay Kumar is the Dean of the School of Computer and System Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Presently, he is also a concurrent professor in the School of Engineering, concurrent professor in the Spatial Center for E-Learning, associated faculty in School of Computational and Integrated Sciences, and an associated faculty in Atal Bihari Vajpayee School of Management and Entrepreneurship at Jawaharlal Nehru University. He has also completed his PhD in the area of database from Jawaharlal Nehru University itself. After completing his MPhil and MSc in Operational Research and BSc Honours in Mathematics from University of Delhi, his research interests are databases, data warehousing, data mining, machine learning, nature-inspired algorithms, disaster management, and big data analytics. So with these few words about him, I invite Professor T.V. Vijay Kumar sir for his lecture. So thank you very much to the organizers. I know Raj Shree, I know Sanjay has been my Professor Sanjay has been my good friend.
and all the other young faculties. I have one of my students also there now, Amit K. So he's also there with this thing. So I just, because I think I will just elaborate on this concept because we are talking about technology. You will lose jobs. So that will never happen. Then we came to the second industrial revolution, that was electricity. Again, people felt, most of the thing can be electricity would do. And suddenly again, there was a scare, but it led to loss of some jobs, but produced more jobs. Then came computers and internet. Everything come as the third industrial revolution. Again, people were scared that if a computer automates everything, then people are going to lose jobs. Manual work will be stopped, but that did not happen. Now we're in the era of fourth industrial revolution, which is dictated by artificial intelligence. Now, why we should not miss this fourth industrial revolution is that all countries, because if you know artificial intelligence, what is natural is what? Natural is the ability of a human to perform cognitive tasks. Various cognitive like learning, perceiving, all these things are natural intelligence. When we talk about machines being intelligent, so we are trying to talk about artificial intelligence in the context of a machine. So industrial 4th revolution is all about use of AI in various Now the thing is that many countries are having focus on this thing because automatically one immediate importance of AI is that it improves the productivity. That is immediate thing. We want to automate many tasks. I was in a lecture in the UNESCO AI forum in Mexico where I delivered a lecture on early warning systems and artificial intelligence. See, I've been associated with various schools because of the same reason that artificial intelligence has no boundary in terms of only computer science. It has its applicability in disasters. We are talking about starting a diploma course in e-learning. Because my background is in operation research, so I'm associated with Atal Bihari Vajpayee management and entrepreneurship also, where again AI is of great use. So I think we should learn one thing, that in today's era of technology, artificial intelligence cannot be ignored. It does not restrict its applications to only area of computer science, but especially it has its own application in humanities, social sciences, biology, and you talk about computational finance, computational economics, then you talk about law. Various places AI has a role to play. The reason is very simple. It simplifies many things which takes a lot of time for a manual effort to do things. So that is the case. Now, the idea is that, in 90s, people were under the assumption that you are soon going to have machines that are going to behave like humans. But gradually they understood one fact. And what they did was, by doing that, they were overestimating AI. But what they did at the mistake was they underestimated humans. And today they realize that how complex the human brain is. And therefore they believe that it's not going to be sooner to have machines that are going to behave like humans. But yes, at least machines can behave in that. So that forced them to actually classify AI as, something called strong and weak AI. And today what we see in machines is something called weak AI. The chatbots we come across, these are weak AI. The weak AI area where they are based on simulations. So they are not based on actual thinking or consciousness as a human does. They're totally based on simulations. And definitely they are not aware why they are talking, whom to are talking, but they are only answering your questions. That is what it's all about. But when it comes to human, it is the consciousness with which a human thinks. And that is what they have defined it as strong AI. Today also machine exhibit weak AI, but they are far away from exhibiting strong artificial intelligence. Again, another category they have come across is generic and narrow AI. Today, when we see machines, which are AI-based machines, have ability to perform a single task. If you talk about the deep blue machines, which play chess with Gary Kasparov, but you can't expect the same machine to play a tic-tac-toe or any other game. But when it comes to humans have ability to perform multiple tasks. They can perform multiple, and still you do not have machines that have ability to perform multiple tasks.
So what happened was that it was the biggest mistake they did was they underestimated the human race, and today they realize, and it's not going to be sooner to have machines that are going to behave like humans. And that is where the superintelligence term comes. The superintelligence term is a combination of what you call the strong AI and the general AI, which happens to have ability to perform multiple tasks. And that is what an AI community is aspiring to have. But if somebody understands AI, they would understand one thing. There's a very interesting saying by Stephen Hawking. He said that when the day the AI becomes successful, that is the day it will be the end of the humanity. So he believes that, that AI can be used in a positive sense and it can also be used in the negative sense. And, today we come across zoos, we see animals, you never know when AI succeeds, you may find humans in zoo. So that is also a thing there, because the machines behave like humans. And that is where the Turing test is all about. We know Turing for various reasons. We know Turing for his machine. We know Turing, who was instrumental in the World War II, victory of the Allied forces in the World War II. The highest award in computer science happens to be ACM Turing Award. But Turing has its own test associated with artificial intelligence. What it says that if you put a curtain between you and a machine, and you don't know on the other side there is a machine, and when you stop interacting, when you keep interacting, you are not able to identify that other side there was a machine, that things move. So the artificial intelligence is the core technology today we have to adopt for any country to progress. I was part of the Indo-French collaboration. I was part of the delegation on artificial intelligence and mathematics. We went as a delegation to Lyon in France because it was a visit in 10 areas. Indo-French collaborated. One of the areas happened to be artificial intelligence mathematics. It was the collaboration after the Macron and Modi visit to France. And that is what happened, because that is why countries are looking forward to having artificial intelligence the main focus. Now, that is where you have various terms which today come out. You have machine learning, you have deep learning, all these terms comes out. Now, the ultimate goal is what today? AI is used for what purpose? I will just have one slide on this. Why AI is used? I'm not going to have many slides, just I want to make you understand this. This is another thing which I would like to emphasize is that this is the ultimate goal of any analytics that come across today. Because when we talk about artificial intelligence, the ultimate goal is to find wisdom from data. You cannot. So if I try to understand this pyramid, I would like to say, you talk about data. Today, everywhere data is there. And that's why digitization is done. Because once you digitize the data, it becomes more relevant. So technology is there, but you never had data which was digitized. But if you digitize the data, now technology comes into the fore. You have data which happens to be raw in nature. When you give meaning to the data, you need to process it. And that is what is called information. You infer something very useful out of the information that happens to be a knowledge. And when merely having knowledge is not sufficient, there are two reasons behind it. First, just having a knowledge does not make you utilize the knowledge. The second reason happens to be the knowledge has to be verified and validated as well. And that is where the wisdom comes into picture. Ultimate goal of any technology which works on data is all about finding the wisdom from data. What is wisdom? Wisdom is a knowledge that is put into action. Then only you can verify how good a knowledge is. And if it is verified, then you use it. I will give a very simple example on a day-to-day thing. For example, just on one side, I say that everybody, when they sing a song, while they are singing the song, and the voice doesn't come outside, they happen to be great singers. Because they believe that they are great singers because voice is not coming outside. But once it comes outside, that is where they realize how good a singer they are. So that is the difference between knowledge and wisdom. And that has its own applicability in this area. So ultimate goal happens to be now Niti Aayog, because every country was working on this AI, artificial intelligence. So Niti Aayog came with 5 focus areas of AI, and that are very relevant today. One area happens to be the healthcare. Today, in the advent of COVID pandemic, you understand how important AI becomes. It is the hotspot identification, how the disease is going to spread, how to diagnose a disease based on imagery data. If people can diagnose based on lung information, they can diagnose how severe it is. So there are various issues that have come. One focus area happens to be in application of AI in the case of healthcare. The other area which is very relevant because we are agricultural-driven society. Another area happens to be agriculture.
Now, today it has become very simple because the government is focusing on why not farmers have small smartphones. They try to take a picture of their crops and send it back to a system, and which a system is already trained to identify what type of disease is it, at what level it is, at what severity it is. So it is like prevention is better than the cure. Agriculture happens to be one. The third area happens to be education. We are all part of the education system. Today, it has not going to be 1:empty learning. Now people have moved towards a personalized learning. Now, online learning has come up. Personalized learning is, for example, I will give you a small example. Somebody is going through a page online, and in between you get some questions to answer. And that is the ability, how good you are in terms of answering questions, how good you are in the concepts. So another area is this. Fourth area happens to be what is called smart city and infrastructure. That is another area where people are focusing, how to have these smart cities, how to have these assistants which are done, how to have this pervasive computing that can occur. You can sit at your office and try to work on the machines which are at home. That is also one there. And then there is smart mobility and transportation. And today we have cars which are automatic driven or semi-automatic driven cars which have come up into place. And that is where the AI focus on. AI is focused on in area of what you call manufacturing, energy, and other places as well. But all countries across the world are focusing on AI. And therefore, technology requires today the focus of the country on artificial intelligence. Because that's why, there are many places, many universities, Center for AI Excellence has been created because it has AI. Why it is not merged with computer science, why it is created as its own. The reason being is AI has no barriers. It has its own application in all areas, whether it comes to sciences, social sciences, or humanities. It is not restricted whatsoever. Now, another area which I have been working in, I will just focus on that and then I will complete my thing, is the area of disaster management. Now, this is one area. Now, people may not be knowing what is a disaster actually. We don't have, earthquakes are not natural disasters, but they are natural hazards. Now, there is a difference between a hazard and a disaster. What a hazard means is that a hazard is something which happens in the nature, but disaster is when that happening leads to loss of life and property. And AI can have its own role to play. Even losing a job is one sort of a disaster. You have various disasters that take place. I work on the area of oceanic earthquakes. I work on floods. I work on stampedes. They are all different forms of disaster. And now you have techniques in AI and deep learning which can enable. Even the pandemic we came across is a disaster. The COVID is itself a disaster. It's a pandemic. So these type of disasters can be addressed. And this has become very relevant in today's scenario because nations have lost many lives. And disasters are one reason for people losing many lives in the nation. And that is where AI also comes into picture. You have various disasters in the form. As I said, losing a job is a disaster. For example, stampedes are disasters. Stampede has a specific pattern that makes hazards lead to a disaster. So one has to understand hazards and disaster. You have earthquakes every day in Japan. But do you lose life? No. So they are hazards, but they are no more disasters. Unless it leads to loss of life and property. What I mean to say is, we have this National Technology Day, and we should not forget the importance of AI. All institutions across the country has to produce people who are adept, who are expert, who are skillful in this area. In IT technology, they say that in future, 80% of jobs are going to be data scientist jobs. And data science cannot exist without artificial intelligence. So one has to focus that, but at the same time, one has to understand that AI has no barriers. It is not constrained within computer science. It has its own application in various areas, leading from even, English, linguistics, when you talk about biology, medicine, pharmaceutical, you talk about social sciences, the social dynamics comes into picture. You talk about languages because NLP is one area where it becomes very, very relevant. So these areas are very, very relevant when you talk about the area of artificial intelligence. So on this technology, the Industry 4 revolution, because if you are behind this,
then you are going to lose many things as a country. So that's why India has focused, Niti Aayog has focused on areas of AI. They have been having collaborations, especially with France, and that is one step ahead. But at the same time, educational institutions should start such something like Center of AI Excellence or focus their research on artificial intelligence, because today we have all data which is digitized. As soon as you digitize the data, AI becomes very, very relevant. And that is what the focus is. So I, with this, would like to thank the organizers and congratulate them to come out with such a day, which is very, very relevant. But at the same time, we have to keep pace with the world. We always get technology 5 years later, 10 years later. Why should we be late? Why should we not be on time? And AI is one area all countries are focusing, and we should also focus, because this is the most core area in the area of Industrial 4 Revolution. That's why sometimes I tell my students, be wise and don't be otherwise in being otherwise. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your enlightening lecture. You discussed very clearly about artificial intelligence and the fourth industrial revolution. It is true that there is only a difference of consciousness between artificial intelligence and human beings. Otherwise, we would not be able to know whether at the other side there is a machine or human. You differentiated between hazards and disasters, and you highlighted that with the help of AI, we can address these disasters. So thank you so much, sir. Further, now the time has come to listen our chief guest, Professor Anand Prakash, sir, Honorable Vice-Chancellor, MGCUB, Motihari. Though I know, we all know about him very well. And there is not any need of introduction. But as I already said, that I need to follow the custom. So I must take the privilege to share with you all a brief CV of Professor Anand Prakash, sir. Professor Anand Prakash, sir, has more than 19 years of research, teaching and administrative experience. He did his PhD in the area of biotechnology and has been postdoctoral fellow at the Department of Psychiatry, University of Illinois, Chicago, USA, and Department of Pharmacology, Creighton University, Omaha, Nebraska, USA. He also has served our university as assistant professor, and he was directly appointed as professor at MGCUB, Motihari, and now he is leading the university as a vice-chancellor. His area of interest includes neurobiology of learning and memory and addiction, etc. With these few words about him, I request Professor Anand Prakash, sir, to delight us with this lecture. Okay. Thank you, Alka. Dr. Alka. Thank you. Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay. So, Honorable Professor RP सिंह जी, जो मेरे गुरु भी हैं और सम्मानित भी रहे हैं, उनके साथ एसोसिएट होकर मैंने काफ़ी काम किया है, विश्वविद्यालय में उनके साथ रहा और उनसे काफ़ी प्रभावित भी रहा। तो आदरणीय प्रोफेसर RP सिंह जी, आज के गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर PV विजय कुमार जी, प्रोफेसर RA खान जी, प्रोफेसर संजय कुमार द्विवेदी जी, प्रोफेसर कमान सिंह जी, डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे, डॉक्टर राज श्री, डॉक्टर पवन चौरसिया, and dear students and other people who have joined the online lecture. So first of all, I would like to thank the organizers, especially Raj Shree and Dhirendra, for inviting me for such a informative session on this auspicious day of technology, the National Technology Day.
So thank you very much for making me a part of this lecture. तो आज का दिन अभी मैं सुन रहा था, सभी लोगों को सुन रहा था कि टेक्नोलॉजी का डे है, और टेक्नोलॉजी में चूंकि कंप्यूटर विभाग करा रहा है तो कंप्यूटर साइंसेस पे ज्यादा जोर है। कमान सिंह सर का जोर रहा, कभी उन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजी की बात की, उन्होंने कोविड के समय जो हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई उस पर भी बात की। तो मुझे लगा कि काफी चीजें हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो यदि हम शुरू से देखें, अपने स्क्रैच से देखें, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इटसेल्फ, तो वो सोसाइटी और टेक्नोलॉजी दोनों साथ साथ ही चली हैं। टेक्नोलॉजी के डेवलप होने से सोसाइटी डेवलप हुई, और सोसाइटी के डेवलप होने से टेक्नोलॉजी के अलग अलग प्रकार भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो पहले जब एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी तो उस समय जो ज्यादा जोर था वो एग्रीकल्चर पे था। एग्रीकल्चर डेवलप हुई, और उसमें जैसे जैसे अर्बन सोसाइटीज आई तो उनकी नीड्स डिफरेंट हो गई, और उसी के साथ शुरू हुआ दौर जो आज की टेक्नोलॉजी का, जिसको हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहते हैं। और इसी के दो रूप हैं। एक तो रूप है जो आज दिख रहा है, हमें सुविधाएं मिल रही हैं, बहुत सारी चीजें जो आदमी सक्षम नहीं था कर पाने को, वो करने के लिए सक्षम हुआ जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी के सहारे से हम चाहे अपने एयरलाइंस की बात करें, चाहे कंप्यूटर्स की बात करें, चाहे अंतरिक्ष में जाने की बात करें, अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी सुन रहे थे कि सारी चीजें ऑटोमेटेड हो जाएंगी, लेकिन अभी भी उसमें टाइम है। ह्यूमन इंटेलिजेंस का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन फिर भी जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मुझे लगता है कि उसके ही दो रूप हैं। पहले की टेक्नोलॉजी थी वो ज्यादा सस्टेनेबल थी। प्रोफेसर आरपी सिंह सर इस पे काफी काम भी किए हैं और जानते भी हैं कि सस्टेनेबल, उन्होंने काफी इस पे चर्चा भी रही, और उनके सारे लेख इसी से एसोसिएटेड भी रहते हैं, और उनका बड़ा अच्छा काम भी इस फील्ड में है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, क्योंकि वो एनवायरनमेंट से जुड़े हैं तो पहले एनवायरनमेंट के बारे में ही सोचते हैं। तो हमें लगता है कि उन्हीं की तरह सभी को, जो पृथ्वी पे हम लोग हैं, तो पहले यदि हम कोई भी काम करें, कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप करें, उससे सिखा। हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है सर? Sir, actually, I am at a loss to understand the chair, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार वाइस चांसलर। मैं अभी पहचान पाया हूँ आपको, कि अदरवाइज आई एम एकदम कंफ्यूजन में था। भाई मैंने कहा सेंट्रल महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर तो शर्मा जी थे, ये नया नया कोई अपॉइंटमेंट हुआ है क्या? नहीं सर, मैं उनके मैं समझ गया आनंद, समझ गया मैं। Really it is an honor for us that I have seen you there, that you are holding so many positions there, and Yes, being a senior most professor of the Mahatma Gandhi Central University Motihari, you are acting vice chancellor, and I am sure that in certain point of time very soon you will become vice chancellor of Central University. सर वो तो ईश्वर के हाथ में सर, मेरी कोई कोशिश नहीं है वाइस चांसलर बनने की, फिर भी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सर ये कुर्सी बड़ी, मतलब मैं क्या कहूँ, इस कुर्सी पे बैठा हूँ इसलिए कुछ कहूंगा नहीं, आपसे मिलूंगा फिर चर्चा करूंगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा था कि जो हमारे यहाँ की पारंपरिक जो विज्ञान था भारत में प्राचीन समय से ही, वो अगर आज मॉडर्न डेफिनेशन में फिट करने की कोशिश करें तो वो पूरी तरह से सस्टेनेबल ही था। हम प्रकृति को पहले स्थान पर रखते थे, और बिना प्रकृति को का दोहन किए हम लोग उससे उतनी चीजें लेते थे कि हमारा काम चल जाए और आने वाले जनरेशंस का भी उसमें गुजारा हो सके अच्छे से, और उसको नुकसान भी ना पहुंचे। लेकिन आज जिस प्रकार से जो मॉडर्न सोसाइटीज डेवलप हुई और जिस तरह की टेक्नोलॉजी उनके भरण पोषण के लिए, मैं यहाँ पे ये इस बात को कहूंगा कि सस्टेनेबिलिटी मतलब ये जो लाइफ है, सबसे पहले उसके सस्टेनेंस की बात हो
अब लाइफ में केवल ह्यूमन बींग्स नहीं है, बहुत सारे लाइफ के फॉर्म्स हैं, वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं। और विज्ञान का विद्यार्थी हूँ इसलिए इस पे भी जोर दूंगा कि हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं उनसे 9 गुना ज्यादा हमारे साथ बैक्टीरिया भी जुड़े हुए हैं, तो एक माइक्रोबायोटा भी एसोसिएटेड है। तो ये लाइफ सब एक दूसरे से एसोसिएशन का ही नतीजा है। हम ये नहीं कह सकते कि वी आर लिविंग इन आइसोलेशन। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि जब हम आइसोलेटेड नहीं हैं तो वी शुड फोकस ऑन दोज टेक्नोलॉजीज which keep in mind that nothing is going to veer out from the earth। लेकिन आज क्या है, हम अगर एलन मस्क जी को देखें तो आज हम मार्स पे बचने की बात कर रहे हैं। हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश में हैं कि हम मार्स पे जाके रहें, लेकिन जो हमारे पास ये मदर अर्थ है उसको बचाने की कोशिश में बहुत कम ऐसे साइंटिस्ट हैं जो लगे हुए हैं। हम बात करते हैं, अभी संजय द्विवेदी जी भी कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका फील्ड में ले जाना वो हो नहीं पा रहा है। हम बात कर रहे हैं, हम भारतीय परंपरा की बात करें, पुराने समय में मुझे लगता है कि ऐसा होता था, क्योंकि आज हम जो ऐश्वर्य वाला जीवन जी रहे हैं या जिन रिसोर्सेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि हमारे पूर्वज जिस तरह से हम दोहन कर रहे हैं वो किए होते तो शायद आज पृथ्वी पे ये सारे रिसोर्सेज ना होते। तो जो मॉडर्न सोसाइटीज की मैं बात कर रहा था कि जो भयावह रूप हम नहीं दिखा पा रहे हैं, या बहुत सारी चीजें मैंने देखा कि कई बार पॉलीथीन के यूज पे या केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज पे या तमाम ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं जो दुनिया के और रीजन्स में बैंड हैं, वी आर यूजिंग इट इन इंडिया। कई सारे देश में ऐसे जोन्स भी बन गए हैं जिनको कैंसर कैपिटल भी कहा जा रहा है, और हम डायबिटीज के कैपिटल बने जा रहे हैं, कैंसर के केसेस हमारे यहाँ ज्यादा आ रहे हैं। तो ये किसका परिणाम है? ये टेक्नोलॉजी का परिणाम है या किसी और चीज का परिणाम है? या हम टेक्नोलॉजी डेवलप करते समय उसके आफ्टरमैथ्स को सोचते नहीं है? हम एटम बम बना तो लेते हैं, हम उसको किसी के विध्वंस के लिए यूज कर लें, वो तो हो चुका, लेकिन हम उसको अपने देश में किसी अच्छे चीज में इस्तेमाल करें, इस पे बहुत कम काम हो पा रहा है। उस पे तमाम ऐसे सर कह रहे थे, अभी कमाल सिंह सर कह रहे थे कि हमें टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए या अपनी टेक्नोलॉजी बाहर वालों को देने में कठिनाई आ रही है, क्योंकि तमाम ऐसी वर्ल्ड एजेंसीज हैं जो ऐसा करने नहीं देना चाहती हैं। तो अब एटॉमिक एनर्जी की बात है, तो हम अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए करें तो उसके लिए तमाम नॉर्म्स हैं, हमें ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने में परेशानी आती है। तो मुझे जहां तक लगता है कि जो इस टेक्नोलॉजी डे का थीम है, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात मुझे लग रहा है कि पिछले 20 दशक से हम लोग सस्टेनेबिलिटी की ही बात कर रहे हैं, बस अप्रोचेस ही बदल रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एनर्जी कैसे सस्टेनेबल हो, हेल्थ कैसे सस्टेनेबल हो, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कैसे बनाए जाएं कि उनकी सस्टेनेबिलिटी एश्योर की जा सके, पानी जो सबसे आवश्यक है जीवन के लिए उसकी सस्टेनेबिलिटी, उसको कैसे हम बचा के रखें, इन सब की टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है। कूड़ा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब हम अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ये सुन रहे थे कि तमाम हम लोग ऐसे गैजेट्स यूज कर रहे हैं, तमाम प्लास्टिक्स यूज कर रहे हैं, हमारी जितनी भी मशीनरी मॉडर्न आ रही है, हमारी कार से लेके हमारे गैजेट्स तक, हमारे कंप्यूटर्स तक, हमारे फोन्स तक, ये सारे कहीं ना कहीं ऐसी चीजों से एसोसिएटेड हैं जो बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है और जो आगे सस्टेनेंस में बहुत ज्यादा परेशानी पैदा करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपने परंपरागत रिसोर्सेस पे जाके सबसे पहले किसी टेक्नोलॉजी को डेवलप होने से पहले, डेवलप तो होंगी, फेल भी होते हैं टेक्नोलॉजी, कुछ फेल टेक्नोलॉजीज भी होती हैं, कुछ मार्केट में आ जाती हैं, कुछ फील्ड में आ जाती हैं, लेकिन उन टेक्नोलॉजीज को कैसे यूज करना है और पहले ही उनसे जो नुकसान होने वाला है आगे और उस नुकसान के ऊपर कैसे हम भरपाई करेंगे उसको सोच लेना चाहिए।
तभी सस्टेनेबिलिटी की हम बात कर पाएंगे। अब जब सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे तो ये बड़ी चीज है। अब इसमें तमाम पॉलिसीज देश की हैं, उन पॉलिसीज का इंटरवेंशन, इंस्टीट्यूशनल इनोवेशंस पे जोर देना पड़ेगा कि ऐसी टेक्नोलॉजीज बने जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज हों, जिनको मैं कहना चाहता हूँ बार बार कि ग्रीन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और तीसरा, हमें नए अप्रोचेस लेके आने पड़ेंगे जो शेप कर सकें इस तरह के इनोवेशन के प्रोसेसेस। तो हम ज्यादातर लोग यहाँ पे जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो विज्ञान के ही लोग हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, और जो हमारा वेस्ट का अप्रोच रहा है जो उसको छोड़ के हमें कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जिस पे आज हम जोर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की कई योजनाएं ऐसी आई, उसमें आपके मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट्स आए जिसमें टेक्नोलॉजी के तमाम लोग यहीं पे आके इंडिया में ही प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तमाम ऐसी पॉलिसी इंटरवेंशंस भी हुए हैं। मैं जानता हूं कि खरीदारी में आजकल अगर मेक इन इंडिया का मुहर नहीं है तो यू कैन नॉट बाय दैट इजीली। तो बहुत सारी चीजें ऐसे देश में हो रही हैं, और क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हूं तो मुझे लगता है कि बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल आगे प्ले करेंगे। बायोडिग्रेडेबल चीजें इस्तेमाल हो, बायो पॉलीमर्स का इस्तेमाल हो, बायोलॉजी से निकले जो प्राकृतिक चीजें हैं उनका इस्तेमाल हो। इससे मुझे लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम आगे बढ़ पाएंगे। वो चाहे मेडिकल की फील्ड हो, वो चाहे कंप्यूटर्स की फील्ड हो, वो चाहे हमारे ई कॉमर्स की फील्ड हो, या जितनी भी नए तरह के इकोनॉमीज डेवलप हो रही हैं वर्ल्ड में, वो सारी चीजें हों। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी अप्रोचेस में, अपने पॉलिसीज में, अपने जो इनोवेशंस हैं उसमें सभी में चेंजेस लाके ही हम लोग कुछ नया कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आगे अभी हम लोग सभी सुनना चाहेंगे अपने प्रोफेसर अति प्रिय अपने प्रोफेसर आरपी सिंह जी को। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा टीम को, राज श्री जी को और उनकी सारी टीम को, धीरेन्द्र जी की सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज इस दिवस पे उन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया, इतने अच्छे स्पीकर्स को बुलाया, और मुझे आशा है कि सारे स्टूडेंट्स और जितने भी लोग इससे जुड़े हैं सभी इससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मेरा पुनः नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, ये सत्य है कि इंसान और तकनीक एक दूसरे के पूरक हैं। ये भी सच है कि इस तकनीक के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का इतना दोहन ना करें हम कि परिणाम भयावह हैं। हम तकनीक बनाते हैं सुविधाओं के लिए, परंतु उसका नकारात्मक पहलू एड्रेस करना भूल जाते हैं। एक्चुअली आपका गंभीर व्याख्यान सुनकर मुझे अपने बचपन में सुनी हुई एक गीत की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, जो कि मुझे लगता है मुझे शेयर करना चाहिए, ये सही प्लेटफॉर्म में शेयर करने के लिए, कि एटम बमों के जोर से ऐसी है ये दुनिया, एटम बमों के जोर से ऐसी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। तुम हर कदम उठाना जरा देख, तुम हर कदम उठाना जरा देख। थैंक यू सो मच सर फॉर योर लेक्चर। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रोग्राम को चेयर कर रहे एनवायरमेंटलिस्ट प्रोफेसर आरपी सिंह सर को, जो कि IQAC के डीन भी हैं, IIC के चेयरमैन भी हैं, और कहार पत्रिका के संपादक के अलावा वो एनवायरमेंट से संबंधित बहुत से कार्यों के अग्रेता हैं। तो आप सही कह रहे थे सर, आनंद प्रकाश सर, आप सही कह रहे थे कि हम सबको इंतजार है उनके लेक्चर का, उनके व्याख्यान का। तो मैं सर से अनुरोध करूंगी कि सर आप अपना व्याख्यान हम सभी को दें। हम सभी आपको सुनने के लिए बहुत आतुर हैं सर। नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर आनंद प्रकाश, जो हमारे कुलीग भी रहे हैं और अभी कुलपति हैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के। मैं आपको विश्वविद्यालय के फ्रेटर्निटी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर टीवी विजय कुमार जी जो JNU से हैं, दूसरे वक्ता प्रोफेसर कमान सिंह जी, डीन प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, डायरेक्टर प्रोफेसर आर्य खान जी, डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे जी, डॉक्टर राज श्री, डॉक्टर पवन चौरसिया जी, डॉक्टर अलका अग्रवाल और बहुत सारे हमारे सीनियर कोलीग्स, फैकल्टी, लखनऊ यूनिवर्सिटी से डॉक्टर पुनीत मिश्रा भी जुड़े हुए हैं और सभी जो हमारे स्टूडेंट्स और गेस्ट हैं जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं। सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर आनंद प्रकाश के लिए। वो हमारे साथ काम किए यहाँ और सीधे वो असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर बने। खासतौर से विद्यार्थी भी जुड़े हैं, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपने उनका वक्तव्य सुना। वो जब थे तब भी, जब यहाँ थे तब भी और अभी भी हम देख रहे हैं वैसे ही बड़े गंभीर कंसर्न वाले साइंटिस्ट और ट्रू टू हार्ट व्यक्ति थे। साइंस को उन्होंने बहुत अच्छे तरह समझा था और यहाँ जब थे तो उनका योगदान जरूर, आज बाई चांस बहुत दिनों के बाद उनको विश्वविद्यालय ने याद किया है किसी रूप में, तो मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट उनके प्रयास से यहाँ शुरू हुआ था, ब्रेन एंड कॉग्निशन साइंस का, जो हम लोग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो एक उनके रूप में इस विश्वविद्यालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैकल्टी को रिटेन नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से, लेकिन आज हमें संतोष है कि वो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर काम कर रहे हैं और उनको हम सब बधाई देते हैं। मैं यह बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे कुलीग तो जानते होंगे लेकिन स्टूडेंट्स नहीं जानते होंगे और उनको ये समझना चाहिए कि अगर आदमी ट्रू टू हार्ट है, ट्रू टू प्रोफेशन है, ट्रू टू बिजनेस है और जिम्मेदारी से काम कर रहा है तो उसको देर सवेर रिकॉग्निशन मिलती है, यहाँ नहीं तो वहाँ कहीं न कहीं मिलती है और हमें इस तरह के व्यक्तित्वों से सीखना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो ये जो थीम है आज की, इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यह टेक्नोलॉजी दिवस पर बहुत ही एक बहुत महत्वपूर्ण थीम है। मतलब इसको इस रूप में रखना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब कुलपति महोदय ने मुझे आदेश दिया कि वो किन्हीं कारणों से नहीं रह पाएंगे और मैं इसमें शामिल हूँ, तो मैं सोच रहा था कि सारे टेक्नोलॉजी के लोग हैं और बड़ी टेक्नोलॉजी का ही बात होगा, टेक्नोलॉजी का ही गुणगान होगा, तो उसमें मैं ही सस्टेनेबिलिटी की बात करूंगा पर्यावरण का होने के कारण से। लेकिन ये थीम में ही निहित है और सभी वक्ताओं ने टेक्नोलॉजी की बात की और टेक्नोलॉजी अपने आप में हमारे जीवन को ईज करती है और सभी तरह की टेक्नोलॉजी हमारी सस्टेनेबिलिटी के खिलाफ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम तरह की हमारी सहूलियतें टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। प्रोफेसर आनंद प्रकाश ने अभी शायद अटेंड भी किया होगा, अभी UGC में भी मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ वो फिजिकल जो फैसिलिटीज हैं उनको ह्यूमन कंसर्न और ह्यूमन रिलेशंस और वैल्यू सिस्टम से जोड़ने की बात वहाँ भी पूरे देश में चल रही है। इस कंटेक्स्ट में मैं यह कहना चाहूँगा कि सस्टेनेबिलिटी की बात हम जब करते हैं तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है सोशल सस्टेनेबिलिटी भी हो, जो हमारे देश के लिए, अलग अलग देशों के लिए अलग अलग तरह का रेलेवेंस रखती है। हमारे यहाँ कई तरह की सोशल इक्विलिटी की बात है, जेंडर इक्विलिटी, ये बहुत सारे कम्युनिटीज के बीच में इक्वल रिलेशंस नहीं है, इक्वल स्टेटस नहीं है। तो वो हम सोशल सस्टेनेबिलिटी जब कहते हैं तो वो एक अपने आप में कॉम्प्लेक्स चीज है। जब हम इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी कहते हैं तो उसके साथ सोशल सस्टेनेबिलिटी भी निहित है। इकोनॉमी सिर्फ मार्केट से जो इकोनॉमी ड्राइव होती है वही इकोनॉमी नहीं है।
इकोनॉमी पूरे एक जो देश की इकोनॉमी है, दुनिया की इकोनॉमी है, वो वहाँ के सभी लोगों के खुशहाली से जुड़ी हुई है। और वो भी एक कम्प्लेक्स इशू है, इसको मतलब इसको अच्छे डिटेल में समझना चाहिए कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्या है। और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी तो एक्चुअली पूरा मतलब इस बात को जैसे प्रोफेसर आनंद प्रकाश ने अप्रिशिएट किया, शायद प्रोफेसर कुमार सिंह ने भी अप्रिशिएट किया, और इसको बायोलॉजी के लोग ज़्यादा अच्छे से समझते हैं कि इकोसिस्टम जो फंक्शन है, इसमें सारा जो एनर्जी और मैटर का फ्लो है, उसी फ्लो के कारण से ही पृथ्वी एक ऐसा ग्रह बना हुआ है जिस पर इस तरह का मनुष्य और तमाम बिलियंस ऑफ बिलियंस जो लिविंग फॉर्म्स हैं, वो एक खास तरह के को एग्जिस्टेंस में रहते हैं। वो टूटने के साथ हम मतलब हम सरवाइव नहीं कर सकते, पूरा ये सिस्टम नहीं सरवाइव कर सकता। आज का युग टेक्नोलॉजी एक तरफ बहुत फायदेमंद है, लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण से ही, टेक्नोलॉजी की डोमिनेंस से आज आप देख रहे हैं दुनिया भर में युद्ध हो रहे हैं, युद्ध में भी टेक्नोलॉजी यूज होती है। टेक्नोलॉजी के कारण से ही इस एज को हम ह्यूमन एज कह रहे हैं। ह्यूमन एज इज नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि जहाँ बिलियन ऑफ बिलियंस स्पीसीज एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहाँ आप किसी एक का एज बना के सस्टेन नहीं कर सकते तो हमारे इकोसिस्टम को। तो हमें टेक्नोलॉजी के बारे में सभी फायदों के साथ भी ये विचार करना चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी जो बनाएं वो किसके लिए बनाएं, किस तरह की बनाएं, कितनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बनाने में भी बहुत तरह के वेस्ट जनरेट होते हैं, बहुत तरह के टॉक्सिक सब्सटेंसेस जनरेट होते हैं, और उसके इस्तेमाल के बाद डिस्पोजल के साथ भी इस तरह की बहुत चीज़ें हैं। तो ओवर यूज मतलब मार्केट ड्राइवन ओवर यूज बहुत फायदेमंद नहीं है टेक्नोलॉजी के लिए। एक तो ये बात है कि हमें इस बात को समझना चाहिए और एक होलिस्टिक वैल्यू सिस्टम के साथ ही टेक्नोलॉजी का विकास करना चाहिए। दूसरी बात, जैसे यूनाइटेड नेशन ने भी इस चीज़ को महसूस किया और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है कि हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ें, और उसके लिए टेक्नोलॉजी का जो रोल है उसमें कई तरह की बातें हो रही हैं। एक तो यह है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में जो रोल निभाना चाहिए वो नहीं निभा पा रही है। अभी बात हो रही थी लैब टू लैंड और इस तरह की समस्याएं हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी बनाने वाले लोग ये मानते हैं कि टेक्नोलॉजी लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं जो उसके रिसिपिएंट हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। उसके सोशियो इकोनॉमिक कारण हैं, उसके टेक्नोलॉजी के सस्टेनेंस के कारण है, उसकी कास्ट है, उसका आगे का मैनेजमेंट है, मेंटेनेंस है, बहुत सी बातें हैं। तो वो उसके ऊपर भी बहुत तरह के ट्रांसलेशनल रिसर्च हो रहे हैं, बहुत तरह के टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है, और जैसे सस्टेनेबिलिटी की भी बात हो रही है, कई 2-3 दशकों से हो रही है। लेकिन इसमें हम बात कर रहे हैं अभी एक्चुअल जो इसका एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म डेवलप नहीं हो पाया है, और इसके स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए हमें पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फिलॉसफी को एक बार नए सिरे से विचार करना चाहिए और समझना चाहिए। जो साइंस है, साइंस से टेक्नोलॉजी, साइंस इज मदर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मदर तो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है बच्चे से, तो साइंस टेक्नोलॉजी से बड़ा महत्व रखती है। और साइंस में 2 और चीजें हैं जिसकी हम बात कम करते हैं, कंसेप्ट और मेथोडोलॉजी। साइंस में जो कंसेप्ट है और जो मेथोडोलॉजी है, उसको टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में अगर हम शामिल करें, उसको भी पूरी एम्फेसिस मिले, उसको भी ठीक से समझने की कोशिश की जाए, तो शायद हम टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग कर पाएंगे। काफ़ी देर हो गया है, मैं ज़्यादा न कहते हुए आखिरी बात यह कहना चाहता हूँ कि जो हमें आने वाले समय में, खासतौर से जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ने, डिसास्टर्स, जो इंक्रीजिंग डिसास्टर ने जिस तरह का थ्रेट दिया है और जिस तरह की वार्निंग दी है, उसमें
हम पूरी दुनिया सोच रही है कि हाउ टू गो अबाउट ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड सर्कुलर इकोनॉमी, ये दो बात आजकल बहुत हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको हमें समझना चाहिए। और ये एक प्रेजेंट मार्केट ड्राइवन टेक्नोलॉजी से ग्रीन टेक्नोलॉजी और सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ चेंज करने का एक बड़ा मैकेनिज्म है। इसमें अभी बहुत काम होना है, मैं यह कहना चाहता हूँ। अभी तो खैर हम यह बात नहीं कर सकते ज़्यादा, इस पर समय की बात है, लेकिन ये कई मुद्दे जो आज उठे हैं, तमाम वक्ताओं ने उठाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसमें एक है कि जो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है फ्यूचर में। सस्टेनेबिलिटी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली है। और जो कन्वर्जन है प्रेजेंट जो डेवलपमेंटल पाथवे का एक ग्रीन पाथवे में जो सस्टेनेबल है, यह एक बड़ा चैलेंज है और सभी इंटेलेक्चुअल्स को मिलकर साथ इस पर गंभीरता से काम करना पड़ेगा। और हम बहुत कैजुअल तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी को अगर लेंगे तो हम एक ऐसे ह्यूमन एज में पहुंच जाएंगे जहां मनुष्य से टकरा रहा है, मनुष्य पृथ्वी से टकरा रहा है, मनुष्य अपने ही इकोसिस्टम से टकरा रहा है और विनाश की ओर जा रहा है। हम वहां पहुंच जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर को, अपने मुख्य अतिथि को, सभी वक्ताओं को और ऑर्गेनाइजर्स को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर आपके इतने महत्वपूर्ण लेक्चर के लिए। आपने बताया कि इस पृथ्वी पर इकलौती स्पेसीज इंसानी नहीं है, बल्कि करोड़ों और स्पेसीज भी हैं। टेक्नोलॉजी के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम तभी कर पाएंगे जब वह उन करोड़ों दूसरे स्पेसीज के लिए भी उतना ही फायदेमंद हो जितना कि इंसानों के लिए। सर आपका लेक्चर सुनने से पहले मैं हमेशा ये सोचती थी कि टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो इंसान के लिए फायदेमंद हो, क्योंकि अभी भी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं वो इंसानों के लिए ही अदर साइड में नुकसानदायक हैं। एट ए टाइम तो वो फायदा लगते हैं, बट एट द अदर साइड दे आर हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग। बट आपके लेक्चर से मुझे एक और चीज़ पता चली कि हाँ, हमें उनको भी तो सस्टेन करवाना है जो अदर स्पेसीज हैं जिनके बिना हमारी पृथ्वी का एग्जिस्टेंस भी पॉसिबल नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर। नाउ वी आर लीडिंग टू द एंड ऑफ द सेशन ऑलमोस्ट। So an event, whether it is a small or big, it is an effort of each and every individual of the team, and we must be very thankful to every individual for their efforts. So for this purpose, I invite Dr. Pawan K Chaurasia sir to propose vote of thanks. Thank you, Dr. Alka ma'am. Am I audible? थैंक यू। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर अलका मैम को और डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे सर का, जिन्होंने ये मौका दिया मुझे धन्यवाद ज्ञापन देने का नेशनल टेक्नोलॉजी डे पे जो है। और धन्यवाद ज्ञापन देने से पहले सर्वप्रथम मैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करना चाहूँगा, जिन्होंने 11 मई 1998 को जो है पोखरण परमाणु जो साइंस टेक्नोलॉजी डे देने का जो मकसद था जो है, वो चाहते थे कि हमारे देश पे जो है जो लोगों के विश्व का जो है एक ध्यान हट रहा था कि हम विज्ञान में पीछे हैं, तो मकसद उनका था कि पूरे विश्व को हमारे देश की तरफ आकर्षित करना, जिसके मकसद से उन्होंने वो पोखरण परमाणु बम का वहां पे किया और कहा कि हमारे जवान ही नहीं, हमारे किसान ही नहीं, हमारा विज्ञान भी काफी आगे है। इसी मकसद से उन्होंने एक नया नारा दिया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तब पूरे विश्व ने कहा कि ये परमाणु बम कहीं ऐसा ना हो पूरे विश्व को तबाह कर दे। तो उनका ये था कि हम ये परमाणु बम जो प्रयोग करेंगे वो हम अपनी आत्मरक्षा के लिए करेंगे।
ये किसी भी देश के खिलाफ हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये इसके लिए हम माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करता हूं कि वाकई हमारे देश को जो है पूरे विश्व के पटल पे लाए, और उनका मकसद था कि हमारा देश टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़े। आज पवन सर, हाँ मैम, अनम्यूट करिए। हाँ जी, फिर से म्यूट हो गया है सर। हाँ मैम, अभी आवाज आ रही? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, थैंक यू, सॉरी। धन्यवाद ज्ञापन। सर्वप्रथम मैं डिपार्टमेंट ऑफ आईटी की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह सर का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। सर अपनी व्यस्तता के कारण आज उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन कल हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे सर को बुलाया, डिपार्टमेंट बताया कि कुछ व्यस्तता के कारण आज हम नहीं उपस्थित पाएंगे, लेकिन सर का हमें समय समय पर आशीर्वाद और आशीष वचन मिलते रहन, उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। सर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर हमें ये मौका दिया डिपार्टमेंट ऑफ आईटी को जो है इस नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाने के लिए। सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रोफेसर आरपी सिंह सर, जो कि बहुत हमारे सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हैं, कई उस कमेटी के चेयरमैन हैं, विभागाध्यक्ष भी हैं। सर आपने समय निकाला और आपने सर सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, जो टेक्नोलॉजी के दुष्प्रभाव हैं, किस तरह से जो है हम टेक्नोलॉजी में कंसेप्ट्स को, मेथोलॉजी को किस तरह से प्रयोग किया जाए, वाकई ये बहुत ही आज के समय में सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, हम टेक्नोलॉजी में तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वाकई वो क्या टेक्नोलॉजी हमारे समाज के लिए फायदेमंद है, नहीं है। वाकई हमें टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो वो समाज में किस तरह से उसका फायदा उठाए, लेकिन वो इको फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है, वो सस्टेनेबिलिटी होना जरूरी है। सर आपने इस पे ध्यान हमारा आकर्षित किया, हमारे जितने भी हमारे यहाँ पे उपस्थित लोग हैं, लोगों ने उसका फायदा उठाया। सर आपने समय निकाला, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रोफेसर आनंद प्रकाश सर, ऑनरेबल वाइस चांसलर महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतीहारी, आज आप हमारे चीफ गेस्ट हैं सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय बहुत ही व्यस्त होता है, क्योंकि आपने अभी वाइस चांसलर का पद आपने ग्रहण किया है और जिम्मेदारियां भी हैं, फिर भी आपने सर हमारे विश्वविद्यालय के लिए समय निकाला। आप यहाँ से पहले से जुड़े हुए हैं, आप यहाँ पे आपने यहाँ पे भी समय दिया हुआ है। हमारा पूरा विश्वविद्यालय, हमारा विभाग, हमारी पूरी कमेटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है सर। और आपने जिस तरीके से वाकई आपने काम भी किया हुआ है इन सब फील्ड्स में, चाहे पॉलिथीन की बात हो, चाहे वाकई जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जैसा आपने कहा कि पॉलिथीन के जो है इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, पेस्टिसाइड्स के क्या इफेक्ट आ रहे हैं, और जैसा आपने बताया कि कैंसर जो सबसे बड़ा समस्या हमारे पूरे समाज में इस समय आ रही है, कि 10 में से अगर देखा जाए तो हर दो आदमी जो है हिंदुस्तान में जो है कैंसर का जो है सबसे कैंसर का रोगी है। तो वाकई ये बहुत बड़ी समस्या है, और हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो इसके दुष्प्रभाव हैं उस पे भी हमें काम करने की आवश्यकता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पूरा विश्वविद्यालय, हमारा विभाग आपका बहुत बहुत आभारी है, आपने समय निकाला सर। आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर सर प्रोफेसर टीवी विजय कुमार सर, जो डीन स्कूल ऑफ साइंस जेएनयू, सर का हमें कई बार आशीर्वाद मिला। आज मैं पुनः अपने विश्वविद्यालय में हूँ, लेकिन इसके पहले भी जहाँ आनंद सर के साथ में मोतीहारी में भी काम किया, वहाँ पे भी सर का आशीर्वाद मुझे मिला, और यहाँ पे भी मुझे सर का आशीर्वाद मिला। सर का जितना मैं धन्यवाद करूँ, मैं बहुत मैं पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से सर आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, अपने विभाग की तरफ से। सर आपने वाकई एआई जो हम पूरा, अगर कंप्यूटर साइंस का कोई अगर स्टूडेंट है और जानता है तो आपको सर बहुत अच्छे से जानता है कि एआई में सर आपने बहुत काम किया, मशीन लर्निंग जैसा आपने सारे आपने पैरामीटर सर कवर किया जो है, और 4 स्लाइड में सारी बातें कह दी जो है सर, ये बहुत बड़ी चीज है। एक एक्सपर्ट्स की जो है यही वैल्यू होती है कि छोटी सी चीजों में सब कुछ कह देना कम बातों में।
वाकई सर आपने ट्यूरिंग मशीन की बात की, डेटा टू विजडम की बात की, किस तरह से डेटा को वाकई यूज किया जाए, मशीन लर्निंग हो चाहे डीप लर्निंग हो, किस तरह से यूज करना है। वाकई ये हमारे जो छात्र जुड़े हुए हैं उनके लिए, और इवन हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स, हमारे कलीग जुड़े हुए कंप्यूटर साइंस के या एआई के हों, इवन दूसरे भी डिपार्टमेंट, वाकई बिना मशीन लर्निंग और एआई के जो फ्यूचर है हमारा जो है टेक्नोलॉजी में, अगर कहें एआई और मशीन लर्निंग के बगैर टेक्नोलॉजी जो है डेवलप नहीं की जाती। तो ये बात सत्य है सर, और हम अगर वाकई एआई और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी यूज करें सही तरीके से तो हम विज्ञान में बहुत आगे जाएंगे। और सर ये भी सत्य है कि हमारी टेक्नोलॉजी, हम जितना पूरे विश्व को टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर वो हमारी टेक्नोलॉजी हमारे देश में रहे तो हमारा देश जो है एक नंबर 1 पे कहलाएगा पूरे विश्व में। ये सत्य है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला हमारे विश्वविद्यालय के लिए, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं सर। हमारे साथ जो है प्रोफेसर कमान सिंह सर, जो इस सर से को सरकरा पुरुष के नाम से जाना जाता है। वाकई सर ने जो है सरकरा पुरुष ऐसे ही नहीं कहा गया, सर को जो है अभी हमारी बहुत ही जल्द सर ने एक कॉन्फ्रेंस कराई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र सिंह सर जुड़े हुए थे, वाटरमैन ऑफ इंडिया। उनके साथ हमने कई कार्यक्रम किया हुआ है सर। वाटरमैन राजेंद्र सिंह सर इनके कमान सिंह सर के कॉन्फ्रेंस में आए थे और हमारी फिर उनसे मुलाकात हुई। सर ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप जो है जो काम आप राजस्थान में कर रहे हैं, क्यों ना हमारे उत्तर प्रदेश में भी कुछ इस पे वाटर पे काम किया जाए। इसके लिए प्रोफेसर आरपी सिंह सर ने और सभी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि कुछ हमारा विश्वविद्यालय उनके साथ कोलैबोरेशन करें। और कमान सिंह सर इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सर ने जैसा बताया कि वाकई जो हमारे जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो उसके कुछ रूल्स होने चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि कोविशील्ड के बारे में कहा या कोवैक्सीन की बात कही जो है सर ने जो है, तो वाकई हमें जो भी चीजें डेवलप करें उसको नियमतः प्रयोग किया जाए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और इसको प्रॉपर तरीके से किस तरह से प्रयोग किया जाए। सर आप समय समय पे पूरे विश्वविद्यालय को और बच्चों को भी कुछ न कुछ नए नए ज्ञान प्राप्त करते हैं बच्चे। सर आपने समय निकाला, आपने हम सभी को इसके बारे में बताया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। हमारे डीन प्रोफेसर संजय द्विवेदी सर, सर का समय बहुत व्यस्त होता है लेकिन सर ने समय निकाला। सर सर आपने जिस तरीके से साइंस डे और टेक्नोलॉजी डे के बारे में अंतर, साइंस डे का मकसद अलग था, टेक्नोलॉजी डे का मकसद अलग था, किस तरह से IIM, IIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटी किस तरह से इस तरह से टेक्नोलॉजी में दिन प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं, लेकिन वाकई उस टेक्नोलॉजी को सही तरीके से प्रयोग किया जाए इसके बारे में आपने बताया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम सब जैसा आप लोग जानते हैं, पूरा विश्वविद्यालय जानता है, हम जितने ये चाहे डॉक्टर राज श्री मैम हैं, चाहे डॉक्टर अलका मैम हैं, चाहे डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे सर हैं, चाहे अभी हमारे साथ अमित जी भी जुड़ गए हैं, हम सब ये एक पेड़ की टहनी हैं। और अगर मैं धन्यवाद कहूँगा तो ये मेरे ठीक नहीं होगा। हमारे सबसे जो कह लें हमारे गुरु प्रोफेसर आरे खान सर, सर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। ये जो जितना कार्यक्रम हो रहा है सर के ही मार्गदर्शन में होता है। सर हम लोग को जहाँ गलतियाँ होती है समझाते हैं, सब कुछ बताते हैं और जो भी कुछ कहूँ वो कम है सर के लिए। और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो विभाग में होती हैं। आज हमारा विभाग जो है एक पेड़ की तरफ बंधा हुआ है, सभी उस टहनियों से जुड़े हुए हैं। कोई भी जो है उस टहनी में चाहता है कि क्या करें कि हमारी टहनी जो है और मजबूत हो सके। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोफेसर आरे खान सर की बदौलत है जो आज हमारा विभाग जो है इस मुकाम पे पहुंचा हुआ है। तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला और सर का समय बहुत ही व्यस्त होता है। हम लोग टाइम मांगते हैं सर से तो बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है, तो हम समझ सकते हैं कि सर का समय बहुत हमारे विभागाध्यक्ष और जो विश्वविद्यालय में कहा जाता है यंग फैकल्टी जो है अब यंग हेड हो गए हैं हमारे डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे सर, जो हमारे एक तरीके के टैलेंट की कलीग भी हैं हमारे। तो सर ने
और जैसा कि अभी बताया गया कि मतलब हम लोग वाकई इनके दुखद समय में हम लोग वो भी कहें, माफ करें, लेकिन सर जिस उससे निकल के इस कार्यक्रम को कराया, हम आपके आभारी हैं सर। और आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम करेंगे सर आपके साथ मिलके, लेकिन आपने समय निकाला इस कार्यक्रम में आए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे सर, और सर बहुत ही एक्टिव हैं, ये पूरा विश्वविद्यालय जानता है इस मामले में। कोई भी कार्यक्रम हो, वीसी साहब भी कोई भी कार्यक्रम होता है डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे सर को जरूर याद करते हैं। उसी में जो है हमारी जो कलीग हैं डॉक्टर राज श्री मैडम, सभी जानते हैं विश्वविद्यालय में जो है डिपार्टमेंट ऑफ आईटी को जो है अलग ही एक नजरिए से देखा जाता है पूरे विश्वविद्यालय में। मैं माफी चाहूंगा लेकिन ये सत्य है। और डॉक्टर राशि मैडम जो है पूरे विश्वविद्यालय में ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो इनको नहीं जानता होगा। चाहे एनसीसी हो, चाहे बच्चों की बात हो, चाहे हॉस्टल की बात हो, चाहे सीओई डिपार्टमेंट हो, तो मैं अगर वो गिनती करूं तो छोटी पड़ जाएगी। तो मैं डॉक्टर राशि मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मैडम आपने बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया सारी चीजों को, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अमित सर का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे छोटे भाई की तरह हमारे डिपार्टमेंट में जुड़े और जिस दिन से जुड़े हुए हैं एकदम अलग ही एक अपना मुकाम बना रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम हम लोग के साथ मिलके कर रहे हैं। और डॉक्टर अमित सर के बारे में जब ज्वाइन कर रहे थे तब इनके बारे में मुझे जो है मोतिहारी से पता चला कि हाँ हमारे डिपार्टमेंट में एक और टैनी जुड़ गई है। तो मैं डॉक्टर अमित सर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। विश्वविद्यालय में हमारे जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं डॉक्टर पुनीत मिश्रा सर जो है, पुनीत मिश्रा सर ये कह लें कि हैं तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में, लेकिन ये कह लें कि ये एक तरीके से हमारे जो है मतलब डिपार्टमेंट के कह लें कि बड़े भाई की तरह हरदम जो भी हमें कुछ कार्यक्रम होता है तो हम सर को याद करते हैं। और सर जितना भी जैसे भी होता है वो अपना समय निकालते हैं, 2 ही मिनट के लिए निकाले लेकिन समय निकालते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप शुरू से ही प्रोग्राम में जुड़े रहे सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और डॉक्टर अनीस अहमद साहब भी हमारे साथ लॉ डिपार्टमेंट के जुड़े हुए हैं, और भी हमारे डीन्स, फैकल्टी मेंबर्स, प्रोफेसर्स, हेड्स और स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स बेसिकली जुड़े हुए हैं। मैं सभी रिसर्च स्कॉलर्स सभी का मैं डायरेक्टली जो भी इस प्रोग्राम में उपस्थित है मैं सभी का धन्यवाद हूँ। और अंत में डॉक्टर अलका मैम, मैं धन्यवाद कहूँ, ये मेरी कलीग भी हैं, हमारे बगल में पड़ोस में बैठती है, सब कुछ है। मैडम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और अंत में सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कहने के लिए है, लेकिन वाकई हमें मिल के जो है टेक्नोलॉजी को आगे भी बढ़ाना है, साथ में जो है टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा के समाज के लिए अगर हम कुछ करें, जो है टेक्नोलॉजी तो डेवलप करें लेकिन वो समाज को किस तरह से फायदा करे जो है उसको उस पर काम करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि हमारा समाज जो है टेक्नोलॉजी में तो हम बढ़ते जा रहे हैं, समाज कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। तो हमें जरूरत है सभी को मिलके जो उसको किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को जो है पहुंचा सके वो जरूरी। जैसा कि जो है हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि साइंस फॉर पीपुल एंड पीपुल फॉर साइंस, तो ये वाकई समय आ गया कि हमें साइंस फॉर पीपुल एंड पीपल फॉर साइंस, ये स्टेटमेंट उनका सही करने का समय आया है। जितने भी टेक्नोक्रेट्स हैं, जितने भी हमारे प्रोफेसर हैं, मैं चाहूंगा कि उस जो अगर सही माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगर बात को सही करना है तो हमें इस पे काम करने की आवश्यकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, विश्वविद्यालय की तरफ से, अपने विभाग की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। थैंक यू मैम। धन्यवाद पवन सर। लगा दो स्टाफ मिस्टर हसन, मिस्टर शोभित, लिखा ना उसमें डिपार्टमेंट केमिस्ट्री पूरा लिखा, और राजू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये अभी भी प्रोग्राम को एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो हमारे ऑफिस से ही प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर हो रहे हैं, ज्वाइनिंग दी जा रही है। तो इन सभी को धन्यवाद। अगर इनको धन्यवाद नहीं करेंगे तो शायद हमारा धन्यवाद रह जाएगा। तो अब मैं इस प्रोग्राम के चेयरपर्सन प्रोफेसर आरती सिंह सर से इजाजत चाहूंगी कि वो प्रोग्राम के समापन की अनुमति दें। एम्प्लॉइज नंबर 308। मुझे लगता है कि शायद वो
मीटिंग में नहीं है, लीव कर चुके हैं। सर जुड़ चुके हैं, एक बार मैम रिपीट कर दें प्लीज। अभी से ये जाने मासिक आर्थिक सुन नहीं पा रहे हैं। क्या करें सर, हम आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप हमें प्रोग्राम के मंथली का क्या लिखा है? मंथली लिखे ना। मुझे लगता है मैडम शायद सर कहीं व्यस्त हैं और नहीं सुन पा रहे हैं। जी, सुन नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि काफी इतने अच्छे कार्यक्रम होने के बाद यदि सभी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर और चीफ गेस्ट की अनुमति हो तो हम इस कार्यक्रम को अब बंद करने की उनसे अनुमति चाहते हैं। तो मैं प्रोफेसर आनंद कुमार सर और प्रोफेसर टीवी विजय कुमार सर से अनुमति चाहूंगा कि वो इस प्रोग्राम को समाप्त करने की अनुमति दें। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। जो भी प्रोग्राम ज्वाइन कर रहा है उस सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक्स फॉर कमिंग सर।